Mama Gyantimadandasya Gyanangana Shilakaya Chaksurmilitam Janatasmai Sri Gurve Namaha Sri Chaitanya Maro Vishnam Shtapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadantu Sva Padantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gho Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. Good evening, everyone, and welcome. This evening in this beautiful city of Surat, which was graced by the lotus feet of Srila Prabhupada, I would like to speak this evening about love. श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज सूरत में मैं प्रेम के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा Because actually our whole process is about love. तो प्रेम की सबसे जरूरी विषय है Narottam Das Thakur, the great saint, he said, Hari Guru Vaishnava, that we are learning to develop our love for the Vaishnavas, for the spiritual masters, and Sri Krishna. तो नरोत्तम दास ठाकुर जो कि एक महान वैष्णव है उन्होंने ये कहा है हरि गुरु वैष्णव तो हमें हमारे जीवन में गुरु वैष्णव और कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न करना है Sometimes it's said this is a movement of love masquerading as a philosophy. तो कभी-कभी ये कहा जाता है कि ये आंदोलन प्रेम का है जिसको सिद्धांत के द्वारा बताया जा रहा है It's a movement of love masquerading as philosophy. तो ये प्रेम का जो आंदोलन है इसको सिद्धांत के द्वारा बताया जा रहा है Of course, love is a theme that everyone in this world, without exception, is interested in. तो प्रेम एक ऐसा विषय है जो हर कोई जिसके बारे में बिना बात के Do you want to translate? Maybe let him translate. बिना बात के जानना चाहता है Everyone wants to love and everyone wants to be loved. हर कोई प्रेम करना चाहता है और प्रेम पाना चाहता है We can just understand how important love is in our modern world, and that most, if not the songs today, as well as movies and novels, are about love. तो हम देख सकते हैं कि प्रेम कितना अनिवार्य है कि जितनी भी फिल्में आती हैं गाने होते हैं किताबें होती हैं वो प्रेम पे आधारित होती हैं I want to love, I lost my love. मैं प्रेम करना चाहता हूँ मैं अपना प्रेम खो बैठा हूँ There's even a saying in English, love makes the world go around. अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है कि प्रेम हमें घुमाता है दुनिया भर में And I was reading the other day that one's love of the family is the main force behind all economic pursuits. तो मैं ये कहीं पढ़ रहा था कि परिवार के लिए प्रेम सबसे अधिक बल है हमारे आर्थिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए But be that as it may, we're here tonight in pursuit of a different kind of love. तो आज हम सब मिले हैं और एक दूसरे तरीके के प्रेम को पाने का प्रयास करेंगे You could say the original love, कह सकते हैं कि वो ओरिजिनल प्रेम the love of Radha and Krishna. राधा और कृष्ण का प्रेम Actually, to speak quite frankly, the love of this world is a perverted reflection of that love. तो अगर वास्तविकता में कहा जाए तो यह प्रेम उस प्रेम का प्रतिबिंब है Love in this world is compared to iron, and love in the spiritual world is compared to gold. भौतिक जगत का प्रेम लोहे के समान है आध्यात्मिक जगत का प्रेम सोने के समान है Now, the love that we're speaking about, bhakti,
can be summarized in a very interesting way. भक्ति, जिस प्रेम को हम भक्ति के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बहुत रोमांचक तरीके से समझा जा सकता है. By one of our rasa acharyas. हमारे रसिक आचार्यों के द्वारा. Rasa acharya means the acharya who is teaching us the process of loving Radha and Krishna. रसिक आचार्य वो हैं जो हमें राधा कृष्ण को प्रेम करना सिखाते हैं. Srila Rupa Goswami Prabhupada. श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद. He writes in his illustrious Bhakti Rasamrita Sindhu 1-2-23, Yuvatinyam yata yuni, yunam cha yuvatau yata, manobhiramate tadvan, manobhiramatam twayi. Just as the minds of young women are attracted to a young man, and the minds of a young man are attracted to young girls, Krishna, may my mind be attracted to you. श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जिस तरह एक युवती का मन एक युवक से आकर्षित होता है और एक युवक का मन एक युवती से आकर्षित होता है, उसी तरह मेरा मन आपसे आकर्षित होता है. We all know, let's be honest, we all know the power of attraction for the opposite sex. हम सब इस शक्ति को जानते हैं. It's a very powerful force. ये बहुत ही प्रबल शक्ति है. Are you married? Yes. So, you love your wife? Yes. How much? How much you love your wife? This much. That's good. And where is the wife? Mataji. Your wife? We don't want to embarrass her. And how much do you love your husband? This much. There you go. Thank you. So, that's good. It's Grihastha life. This is proper. But ultimately, we have to transfer this loving propensity to Krishna. तो अंततः हमें ये प्रेम करने की प्रवृत्ति कृष्ण की ओर परिवर्तित करनी हो. But in modern society, it's all backwards. और हमारे समाज में सब उल्टा चलता है. First of all, we're taught, love your body. सबसे पहले हमें सिखाया जाता है अपने शरीर से प्रेम करो. Then extension, love your father and mother. उसका विस्तार है अपने माता पिता से प्रेम करो. Then love your brother and sister. उसके बाद अपने भाई बहनों से प्रेम करो. Then love your society. अपने समाज से प्रेम करो. Love your country. अपने देश से प्रेम करो. Love humanity. पूरे मानव समाज से प्रेम करो. But such love is not fully satisfying. पर ऐसा प्यार पूर्णतः संतुष्टि नहीं देता. Because it's temporary. क्योंकि ये अस्थायी है. And therefore it's not satisfying to the eternal soul. इसीलिए ये शाश्वत आत्मा को संतुष्टि नहीं प्रदान करती है. Of course, such love is human nature. यह प्रेम मानवीय स्वभाव है. I'm not absolutely condemning it. मैं इसे पूर्णतः खारिज नहीं करता हूँ. Srila Prabhupada himself compassionately addresses this type of love for humanity in a purport to Bhagavad Gita. श्रील प्रभुपाद यही प्रेम को अपने तात्पर्य में बहुत ही स्नेहपूर्वक दयापूर्वक बताते हैं. In chapter 1 of Bhagavad Gita, verse 28, भगवद गीता के पहले अध्याय के 28वें श्लोक में we hear Arjuna say, हम यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, Duritme mam svajanam Krishna, yuyutsum samupashtitam, siddhanti mama gathani mukham cha parishushiti. My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. मेरे प्रिय कृष्ण,
अपने मित्रों और संबंधियों को मेरे समक्ष खड़े देखकर, उनको लड़ाई करते हुए देखकर मेरे शरीर के पैर कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। Arjuna is attached. अर्जुन आसक्त है। He's attached to his friends, he's attached to his relatives, and he sees there's going to be a big battle. He's attached to their bodies. अर्जुन आसक्त है अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से। वो देख रहा है कि लड़ाई होने वाली है, इसके वो आसक्त है सबके शरीरों से। But in the purport, Prabhupada said that's not such a bad thing. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इतनी भी बुरी बात नहीं है। Hare Krishna, confirmed. Prabhupada writes, any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in demigods. As such, Arjuna, just after seeing his kinsmen, friends, and relatives in the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them who had so decided to fight amongst themselves. Such symptoms in Arjuna were not due to weakness, but due to his soft-heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान के सच्चा प्रेम होता है, उसके अंदर दैविक गुण, देवताओं समान दैविक गुण अपने आप आ जाते हैं। अर्जुन अपने समक्ष अपने मित्रों, संबंधियों को लड़ने के लिए खड़ा देख रहा था और उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और इसलिए वो लड़ाई नहीं करना चाहता था। ऐसे गुण अर्जुन के हृदय में उसकी दुर्बलता के कारण नहीं, यद्यपि उसके सॉफ्ट हार्टेडनेस, करुणा के कारण प्रदर्शित होता है। But there's a higher understanding, a higher love to be achieved. पर एक और ऊंचा सिद्धांत है। And Krishna points that out in chapter 2, verse 2 of the Bhagavad Gita. कृष्ण दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं। Seeing Arjuna attached like this, Krishna says, my dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They're not befitting a man who knows the higher values of life. कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे अंदर ऐसी अशुद्धताएं कैसी आई? तुम जैसे व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देती है। Prabhupada said that, human natures were attached. It's a quality of a devotee to be soft-hearted. प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों के अंदर ये गुण है कि उनका हृदय बहुत कोमल होता है। But there's a deeper understanding of love. पर इससे गहरी हम समझ सकते हैं कि प्रेम का गहरा। And what is that? और वो क्या है? The soul's love for the Supreme Soul, God. आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है। That love was once there. वो प्रेम होता है। But Bahirmukh, Jagadananda Pandit says in his Prema Vivarta, we turned our face from God to come to this world. जगन्नाथ पंडित कहते हैं कि हम भगवान से विमुख हो गए, इसलिए हम इस जगत में आ गए। If you're talking with someone and then you go like that, it's very offensive. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और अपना मुंह मोड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात नहीं है। So he uses this word, bahir mukh, face, bahir. तो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं बहिर मुख। My mother used to say when she was chastising me, son, you look at me when I'm talking to you. मेरी माँ जब मुझे डांटती थी तो मुझे कहती थी, पुत्र मेरी तरफ देखो जब मैं तुम्हें डांट रही हूँ। So we gave up that loving relationship. We gave it up to come to this world of birth and death. तो हमने उस प्रेम को त्याग दिया और इसी कारण से हम इस भौतिक जगत में। And the purpose of life is to re-establish that lost relationship. तो जीवन का लक्ष्य ये है कि इस खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। In English we have the word religion. अंग्रेजी में ये शब्द है religion, धर्म। No, I said religion. Religion. So the Latin verb religio in religion means to re-establish our connection with God.
तो उस शब्द का अर्थ ये है कि हम कि पुनः अपना संबंध भगवान से स्थापित करना, just like yoga. योग की तरह, Yoga means to reconnect. जिसका अर्थ है कि पुनः With what? स्थापित करना, किससे? With Krishna, with God. कृष्ण से, भगवान से। Religion and yoga are the same. रिलीजन और योग एक ही है, So that's the purpose of life. और यह जीवन का लक्ष्य है। But first of all, we have to understand the inherent faults in a loving relationship in this world. सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि वो गलतियां जो हम भगवान से प्रेम स्थापित करते हुए करते हैं, The imperfection is that it's temporary. पूर्णता यह है कि यह अस्थायी है। Sorry. It's temporary. It's frustrating. ये अस्थायी है। Either you're separated by divorce, अगर आपका तलाक हो गया है, or we're separated by death. और या हम मृत्यु के कारण अलग हो गए हैं, And as much as you're attached to something, when you're separated from it, you feel the same pain. जितना हम किसी से आसक्त होते हैं, जितना ज्यादा हम किसी से आसक्त होते हैं, उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है जब हम उससे अलग होते हैं। If I lose my watch, अगर मैं अपनी घड़ी खो दूं, if it's a very simple 200 rupee watch, okay, But if it's like a Rolex, oh. तो अगर वो एक साधारण सी 200 रुपए की घड़ी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो रोलेक्स हो तो So these are the hard realities of life. तो ये जीवन की कठोर सच्चाई है। We've all, probably everyone's lost a loved one. हम सभी ने किसी न किसी को अपने जीवन में खोया होगा। Grandma, grandpa, हमारे दादा दादी, child. बच्चा, It's painful. बहुत ही दर्दनाक है। Yes, this is love in the mid, but in your relationship with Krishna, the love ad infinitum, the love with Krishna is growing, 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 growing forever and ever and ever in the spiritual world. We can hardly imagine. कृष्ण के लिए प्रेम आध्यात्मिक जगत में हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। We have to be real about this world. We're strangers in a strange land. We don't belong here. हमें इस बात को समझना होगा कि हम अजनबी हैं, हम यहाँ के हैं ही नहीं। We are spiritual. Essentially, we are spiritual, Atma, souls. We belong in the spiritual world. हम वास्तविकता में आत्मा हैं, आध्यात्मिक हैं, हम इस जगत के नहीं हैं। We're like fish out of water. जैसे कि एक मछली पानी के बाहर। You must have some beautiful lakes or rivers here in Gujarat. गुजरात में बहुत सुंदर तालाब नदियाँ होंगी। You go take a fish. Don't go fishing, but you you take a fish and bring him to Surat. आप फिशिंग करने मत जाना, लेकिन एक मछली को सूरत ले आना। Fishy, you're in the murky water. I'm going to take you to Surat. You're going to have a good time. मछली, तुम मैले पानी में हो, आओ तुम्हें सूरत चलता हूँ, बड़ा आनंद आएगा। Fishy, our Prime Minister Modi is from Surat. मछली, हमारे प्रधानमंत्री सूरत से हैं, मोदी जी। Things are improving here. Things are improving. चीजें अच्छी हो रही हैं। So Fishy, here's a car for you. वो मछली तुम्हारे लिए गाड़ी है। Mercedes. मर्सिडीज। Here's the keys, Fishy. Enjoy. ये लो चाबी, मजे करो। You take the Fishy to some bar and you offer him some beer. मछली को बाहर में ले जाओ, बियर पिलाओ। Come on, Fishy. चलो फिशिंग। It's getting better. You
introduce the fishy to a beautiful girl. मछली को एक सुंदर लड़की से मिलवाऊं, His eyes go wong, 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 wong. इसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं His fins are flapping, और वो हिलने लगती है and the girl gets scared and she runs away. और लड़के भाग जाते हैं, लड़के भाग। So a fish cannot be happy outside his element. एक मछली पानी के बाहर खुश नहीं रह सकती है। Take the fish, put him back in the water. मछली को लो दोबारा पानी में डाल दो और वो तैरने लगती। We're laughing at ourselves. We're laughing at ourselves हम सब खुद पे हंस रहे हैं because we're also like fish out of water. We're trying to enjoy those things. They don't bring any lasting satisfaction. हम भी उस मछली की तरह हैं जो पानी के बाहर है। हम उन चीजों में आनंद ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई आनंद ही नहीं है। We'll only be happy when we get back to the spiritual world. हम तभी खुश हो सकते हैं जब हम आध्यात्मिक जगत वापस जाएंगे। And what's the highest happiness? और सर्वोत्तम आनंद क्या है? Love. प्रेम। Even in this world, love is the highest happiness. इस जगत में भी प्रेम सर्वोत्तम खुशी प्रदान करती है। If you have everything, money, gold, fame, nice house, but you don't have someone to share it with, you can't be happy. अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा हो, नाम हो, घर हो, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं हो जिसके साथ आप उसका आदान प्रदान कर सकें, तो आप खुश नहीं रहेंगे। Loneliness is the most miserable thing. अकेलापन सबसे दुर्दाई होता है। But if you have nothing but the shirt on your back, but you have a beautiful wife, a nice husband, children, family members, if you have someone to love, even if you're poor, you can be happy. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप गरीब हो, लेकिन आपके पास एक अच्छी पत्नी हो, बच्चे हो, जिनके साथ आप जो आपको प्यार करते हो, तो आप खुश रह सकते हैं। I've been traveling as a sannyasi this world for 44 years. सन्यासी के रूप में मैं इस जगत का भ्रमण 44 साल से कर रहा हूँ। I met kings and queens, prime ministers, presidents. मैं राजा, रानियों, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से मिला हूँ। Famous athletes. प्रसिद्ध एथलीट से मिला हूँ। Bollywood stars. बॉलीवुड के स्टार से मिला हूँ। Big businessmen. बड़े-बड़े उद्योगपतियों से मिला हूँ। And very often they tell me, Swamiji, help me, I have everything, but I'm not happy. कई बार वो कहते हैं, स्वामी जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। Because sometimes when you're on top, it's very lonely. कभी-कभी जब आप सबसे ऊपर होते हैं, तो अकेले होते हैं। You have many associates, but no lovers. आपके पास कई परिकर हैं, पर वो नहीं जिनसे आप प्रेम कर सकें। Whereas I've been in the slums of Mumbai, in the favelas of Rio de Janeiro, in the townships of South Africa, I meet poor people, but they have a loving wife, they have a loving husband, children, friends. They're happy because love is the highest happiness. मैं मुंबई की झोपड़ियों में गया हूँ, रियो डी जेनेरियो की जगह गया हूँ, वहाँ पे गरीबों से मिला हूँ, जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छी पत्नी है, बच्चे हैं, और वे खुश हैं। So logically in the spiritual world, love is also the highest happiness, but love is eternal. तो logically, आध्यात्मिक जगत में प्रेम सर्वोत्तम खुशी प्रदान करती है, और प्रेम that's actually what we're looking for. जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। So therefore we should be gradually detached from this world. तो धीरे-धीरे हमें इस जगत से अनासक्त होना है। It takes time to become detached. समय लगता है अनासक्त होने में। We can't be artificial. हम कृत्रिम रूप से नहीं कर सकते। And just hearing a lecture like this, run to Rishikesh, just wear a gamcha and sit in the forest and तो ऐसे प्रवचन सुन के हम जंगल में जाके गमछा पहन ले और Oh, you're a yogi. Gradually we become detached. धीरे-धीरे ऐसा होगा।
We can practice renunciation in Grihastha life. हम गृहस्थ जीवन में भी इसका Husband and wife take according to their need, not according to their greed. They can live a simple life and be happy practicing Krishna consciousness. पति पत्नी मिलके आवश्यकता पूर्वक चीजों को करें, लोभ ना करें और ऐसा करते हुए अनासक्त हो सकते हैं. We have many examples of persons who have realized these things in their lifetime. हमारे पास ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने इस बात का आत्म साक्षात्कार किया है. Recently, someone sent me a message on WhatsApp. अभी कुछ ही दिन पहले किसी ने मुझे मैसेज भेजा WhatsApp पर. There's a new movie about Alexander the Great. एक नई पिक्चर आई है Alexander the Great. You've heard about Alexander the Great? क्या आपने सुना है? So they said, you should watch this movie. तो उन्होंने कहा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए. But I said, I've already learned from Alexander the Great what needs to be learned from him. पर मैंने उनसे कहा कि मैं पहले ही सीख चुका हूँ जो Alexander the Great से सीखना चाहिए था. Because on his deathbed, he summoned his generals and he shared with them his 3 ultimate wishes. तो अपने मृत्यु की शैया पर लेटे हुए उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और 3 इच्छाओं को प्रदर्शित किया. He's going to die. वो मरने ही वाला है. So he calls his top generals, come, I have 3 wishes, 3 instructions to you. तो अपने मुख्य सैनिकों को बुलाया और कहा कि मेरी 3 इच्छाएं, मेरी 3 निर्देश हैं तुम्हारे लिए. So after I die, the best doctors in the land should carry my coffin to the burial. तो जब मैं मर जाऊं तो सबसे उच्च चिकित्सकों को मेरे ताबूत को उठाने के लिए बुलाना. And all the wealth that I've accumulated in this life, the money, the gold, the precious stones, the jewels, it should be scattered all around the ground as they carry my coffin to the grave. तो जब मेरे ताबूत को वो ले जा रहा हूँ तो जितना भी पैसा, सोना और हीरे जवाहरात मैंने कमाए हैं उसे मेरे ताबूत के आसपास बिखेर देना रास्ते पे. What? As they're carrying his coffin, all the money, just throw it on the ground as the coffin's going. Money, money, gold, gold, throw it all. तो जैसे उसके ताबूत को ले जा रहे हो तो जितना भी पैसा उसने इकट्ठा किया है उसको रास्ते में ऐसे वैसे करके फेंकते रहे. And as you carry me in the coffin, make sure my hands are outside the coffin, hanging like this. तो मेरे ताबूत को जब ले जा रहा हूँ तो ये ध्यान रखना कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर हों, वो लटकते रहे. So one of his generals said, Alexander, this is really unusual request. Could you explain? तो उनके सेनापति ने कहा कि ये बड़ा विचित्र है. क्या आप समझा सकते हैं ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? Why are you saying such things? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? Can you explain? क्या आप इसको समझा सकते हैं? So Alexander said, yes. तो अलेक्जेंडर ने कहा हाँ. He said, I want the best doctors to carry my coffin to demonstrate that in the face of death, even the best doctors in the world have no power to stop death. मैं चाहता हूँ कि सबसे उच्च चिकित्सक मेरे ताबूत को लेके जाएं तो इससे ये प्रदर्शित होगा कि मृत्यु के समय सबसे उच्च चिकित्सक भी किसी को बचा नहीं सकते. I want the road to be covered with my treasures so that everyone can see that material wealth acquired on this earth stays on this earth. तो वो सड़क जहाँ से मेरे ताबूत को ले जाया जाएगा उसको मेरे पैसे से बिखेर दिया जाए, ये दिखाने के लिए कि जो भी पैसा यहाँ कमाया जाता है वो यही धरती पर रह जाता है. And I want my hands to hang outside the coffin so that people understand that we come to this world empty-handed and we leave this world empty-handed. मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ ताबूत से बाहर खाली हाथ लटकते हैं ताकि लोग ये देखें कि हम खाली हाथ इस दुनिया में आते हैं और खाली हाथ ये दुनिया छोड़ के जाएंगे. It's interesting, बहुत ही रोमांचक है. but does it go to the heart?
और ये हृदय को स्पर्श करता है। Do we really understand those truths and act accordingly? क्या हम वास्तव में इन सच्चाइयों को समझते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं? Or is such wisdom in one ear and out the क्या other? ऐसा ज्ञान बस इस कान से आया और उस कान से निकल गया? So as everything is temporary, like he was explaining, love will come and love will go. तो सब कुछ अस्थायी है, प्रेम भी आएगा और प्रेम भी जाएगा। We come together as friends and family and country members, and then we're separated. We come together as friends and family members, and then we're separated. Birth after birth. जन्म जन्मांतर हम सब मित्र, परिवार और समाज के लोग साथ में आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, और फिर आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। Bhagavad Gita, 10th canto, 5th chapter, verse 25. भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में Nakatra priya samvasha suridam chitta karmanam okena view yamananam pavanam shraptasho yata. Many planks and sticks, unable to stay together, are carried away by the force of a river's waves. Similarly, although we're intimately related with friends and family members, we're unable to stay together because of our various past deeds and the waves of time. बहुत सारी लकड़ियां साथ में नहीं रह पाती क्योंकि वो पानी के बहाव से बहती रहती हैं। इसी तरह यद्यपि हम सब आपस में संबंधित हैं, हमारे दोस्त और परिवार, हम सब भी कभी साथ में नहीं रह पाते। यह हमारे कर्मों पे निर्भर करते हैं और समय पे निर्भर करते हैं। So, that's the first half of the lecture. It's pretty heavy. तो ये आज के लेक्चर के पहला भाग था, बहुत ही भारी था। Don't despair. There's a positive alternative. तो क्या कोई सकारात्मक दृष्टिकोण है, विकल्प है? There's always a happy ending in Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत में अंत हमेशा आनंदप्रद होता है। Chaitanya Mahaprabhu has said, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, the Supreme Lord to be worshipped is the son of the king of Braj. His personal abode is Vrindavan. The most favorable mood of serving him is that which was practiced by the young maidens of Braj. The scripture Bhagavatam is the spotless source of reliable knowledge, and pure love of God is the supreme goal of life. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा ब्रज के राजा के रूप में होती है। उनका इस प्रकार के गोपियों ने की तो सर्वश्रेष्ठ है, और उनका जो प्रेम है वही जीवन का लक्ष्य। और श्रीमद् भागवत जो अमर पुराण है, विशुद्ध ज्ञान प्रदान करता है, पर हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो भगवत प्रेम भी किया गया है। And if someone says, okay, but how to love Krishna? हम कोई कह सकता है ठीक है, लेकिन कृष्ण को प्रेम कैसे करें? I'm convinced. Swamiji gave the lecture. I want to be renounced. I want to get attached to Krishna. What do I do? मैं समझ गया हूँ, स्वामी जी ने अच्छा लेक्चर दिया कि मैं कृष्ण को प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आसक्ति लाना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? Mahaprabhu says, Ramya Kachit Upashana Braja Vadu Varghena Yakopita. If you want to know the process of worshipping Krishna or loving Krishna, just try to follow in the footsteps of the gopis, the cowherd girls of Vrindavan. Their love is the highest perfectional love. अगर आप कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं तो केवल ब्रज गोपियों के पद चिन्हों पर चलिए। ये पूर्ण तरीका है प्रेम, कृष्ण से प्रेम करने का सर्वश्रेष्ठ। It's very easy to fall in love with Krishna. बहुत ही आसान है कृष्ण को प्रेम करना। The whole process is to fall out of love with the material world into love with Krishna.
हमारा पूरा प्रोसेस है कि भौतिक जगत से प्रेम नहीं करना है और कृष्ण को प्रेम करना है। We can fall in love with Krishna because he's so adorable, he's so attractive. हम ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं, प्रशंसनीय हैं। You're blessed in this country. आप लोग पे बहुत कृपा हुई है इस देश। In the West, if you ask someone, tell me something about God, अगर पाश्चात्य देश में अगर आप किसी से पूछें, चलो भगवान के बारे में कुछ बताओ। not Bhagwan, God. और They'll say, God, he lives up there. वो कहेंगे गॉड, वो वहाँ ऊपर रहते हैं। Can you tell me something else about God? क्या आप मुझे कुछ और बता सकते हैं गॉड के बारे में? He's got gray hair उनके बाल खड़े हुए रहते हैं because he's the oldest person. क्योंकि वे सबसे प्राचीन हैं, He's the original person, so he's old man. क्योंकि वे सबसे प्राचीन हैं तो वो बूढ़े होंगे। Can you tell me something more about God? क्या आप मुझे गॉड के बारे में और कुछ बता सकते हैं? No. नहीं। With all due respect, I'm not criticizing another religion. बहुत ही आदरपूर्वक मैं किसी और धर्म को निंदा नहीं कर रहा हूँ। But my point is, how can you love someone you know nothing about? महाराज कहना चाहते हैं कि आप कैसे किसी को प्रेम कर सकते हैं अगर आप उसके बारे में कुछ जानते ही ना हो। Why did you choose your husband or your wife? Because the way they look, the way they walk, the way they talk, the clothes they wear, the music they like. Love is in the details. तो आपने अपने पति या पत्नी को क्यों चुना? क्योंकि वो कैसे चलते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। तो प्रेम उनके बारे में विस्तार रूप में जानने से होता है। They're translating the translator. He's trying his best. So we have so much information about Krishna. तो हमारे पास कृष्ण के बारे में इतनी सारी जानकारियां हैं। The original form of God. भगवान का मूल स्वरूप। Many incarnations. भगवान के बहुत अवतार हैं। But Krishna's avatari, he's the source of all incarnations. और कृष्ण अवतारी हैं, वे सारे अवतार के स्रोत हैं। And it was mentioned that love of the gopis. यहाँ पे कहा गया है गोपियों का प्रेम। Why did the gopis love Krishna? गोपियाँ कृष्ण से प्रेम क्यों करती थी? Because he's a cowherd boy. क्योंकि वो एक ग्वाला थे। And along with his friends and cows, he goes to the pasturing grounds of Vrindavan every day. क्योंकि वे अपने ग्वाल पालों और गायों के साथ वृंदावन में गाय चराने जाते थे। Krishna used to go to the pasturing grounds every day, and the gopis, by social custom, they stayed home. कृष्ण अपने गायों के साथ गाय चराने जाते थे और गोपियाँ सामाजिक रीति के कारण घर पर रहती थी। But when Krishna is in the forest all day long, they're thinking, Krishna's feet are so soft. Now he's walking on the rough ground. तो जब भी कृष्ण जाते तो गोपियाँ सोचती कृष्ण के चरण कितने कोमल हैं, वो इतने खुरदुरे जमीन पे चल रहे होंगे। The stones are pricking his feet. He must be feeling some pain. पत्थर उनके पैरों को चुभ रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे, दर्द हो रहा होगा। Thinking this way, the gopis start to cry. ये सोचते सोचते गोपियाँ रोने लगती। Just see, their relationship with Krishna was so intimate and so deep that Krishna himself had to admit one day, my dear gopis, it's not in my power to repay your love. गोपियों का प्रेम इतना आत्मिक था कि कृष्ण को एक दिन बोलना पड़ा कि गोपियाँ मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान नहीं कर सकता हूँ। My dear gopis, it's not possible for me to repay my debts which you have created by your deep love for me. मेरी प्रिय गोपियाँ, जो प्रेम तुमने मुझे दिया है, उसका मूल्य मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। So we're meant to follow in the footsteps of the gopis. तो हमें गोपियों का के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। And amongst the gopis, who's the topmost gopi? और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन है? Vrindavaneshwari Shrimati Radha. वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। So we have to come to that stage. Prema Pumato Mahan. We have to become perfect
in one very short lifetime. तो हमें उस स्तर पे पहुंचना है, हमें एक जीवन में ही पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करना है, प्रेम को पूर्णांत महान। And how do you fall in love with Krishna? You hear about him constantly. तो आप कृष्ण को कैसे प्रेम कर सकते हैं? उनके बारे में निरंतर सुनते रहें। Just like many of you, it was an arranged marriage. जैसे कि आप में से बहुत से लोगों की अरेंज मैरिज हुई है। It wasn't love marriage, arranged marriage. वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। And how did you become attracted to someone you never met? Your mother said, he's a nice boy. He's so tall. He has dark eyes. He's handsome. Lots of money. And he's Krishna conscious. Oh, I can't wait to marry him. तो कैसे आप उस व्यक्ति से आकर्षित हुए? आपकी माँ ने कहा वो सुंदर दिखता है, वो लंबा है, उसकी गहरी आंखें हैं, उसके पास बहुत पैसा भी है। You're speaking about yourself. Yes, Mataji. A handsome boy, educated. He looks like Korapati. So Shravanam Kirtanam brings Krishna Smaranam! और कीर्तन से आता है कृष्ण स्मरण। Or if we hear about Ram, Sitaram, Lakshman, Hanuman, Ramayan, या अगर आप राम, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, रामायण के बारे में सुने, then in our heart, तब हमारे हृदय में Jai Sri Ram! Jai Sri Ram! Jai Sri Ram! See? You have lots of love for Ram, I can see. But you're Gujaratis, you're supposed to love Krishna. आपके हृदय में बहुत राम के लिए प्रेम दिख रहा है, आप लोग गुजराती हैं, आपके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम होना चाहिए। I'll tell you one short story about a pastime about Krishna. I think it will help you love him even more. तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कृष्ण के बारे में, जिसके लीला सुनाता हूँ, जिसके सुनने से आपके हृदय में कृष्ण के प्रेम और उत्पन्न होगा। So one day, after hearing Krishna had stolen butter, makan, from the local ladies, Yasoda approached Krishna and said, Krishna, you've stolen butter, yes? तो एक बार जब ऐसा यशोदा मैया सुनती है कि कृष्ण ने माखन चुराया है पास के घर से, तो एक मैया जाती है और कृष्ण से कहते हैं, कृष्णा तुमने माखन चुराया है? Maya, it wasn't me. मैया, मैं नहीं था। How could it be me? You sent me to Madhuvan today to herd the cows. मैं कैसे हो सकता हूँ? आपने मुझे मधुबन भेजा था गैया चराने। I left very early this morning. I've just now returned as the sun is setting. मैं सुबह सुबह निकल गया था और अभी शाम को जब शाम को आया हूँ। The cows and my friends are my witness. मेरी गाय और मेरे दोस्त मेरे साक्षी गवाह हैं। How can you accuse me like this, Maya? मैया, आप मुझ पे ऐसा आरोप कैसे लगा सकती हो? And Krishna started crying. कृष्ण रोने लगते हैं। I returned today very tired and hungry. Now you're calling me chore. Maya, you're calling me thief. मैया, मैं घर भूखा थका हारा आया हूँ और अभी आप मुझे चोर बुला रही हो। Maya, how can you be so cruel? मैया, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? Am I no longer your son? क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ? If not, I will not live here any longer. I'll run away from Nandagram. और अगर नहीं हूँ तो मैं और नहीं जीना चाहता, मैं नंदग्राम से चला जाता हूँ। So Mother Yasoda's heart softened. मैया का हृदय कोमल हो गया। She said, Lala, perhaps I'm mistaken. Maybe the neighbors saw someone else. शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने गलती कर दी हो, बगल वालों ने किसी और को देखा होगा। So she put her face in her palms and she started crying. Oh, my son, I was wrong. I'm so sorry. मैया रोने लगी, कहने लगी कि मैं गलत थी। But it was the neighbors who complained. ये पड़ोसियों की गलती है। They swore upon their cows that you spent all day terrorizing their homes, breaking their yogurt pots, and eating the contents, and giving it to the monkeys.
उन्होंने अपनी गायों की सौगंध देके कहा है कि आप दिन भर उन्हें परेशान कर रहे थे, मटकी को तोड़ रहे थे और माखन बंदरों को खिला रहे थे। But maybe they were wrong. Maybe it was some other boy. परंतु हो सकता है कि वे गलत हों, वो कोई और लड़का हो। So seeing his mother crying, Krishna's heart softened. अपनी माँ को रोते हुए देख के कृष्ण का हृदय कोमल हो गया। And placing one hand on her arm, he pleaded, Maya, don't cry. I confess, I stole the butter. तो अपना हाथ मैया के हाथों पे रखकर कृष्ण कहते हैं कि मैं मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैंने ही माखन चुराया। So Yasoda started crying even louder. No, Lala, forgive me, O innocent one. I wrongly accused you. तो मैया रोने लगी कि लाला मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत आरोप लगा रही थी। It's as you say, you were in Madhuvan, you couldn't have done it. तो जैसे तुमने कहा कि तुम मधुवन में थे, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। So then Krishna squeezing his mother's arm, Maya, you are not to blame. I did do it. I did steal the makan. तो कृष्ण अपनी माँ के हाथों को दबाते हुए कहते हैं, मैया मैंने ही ये किया है, मैंने ही माखन चुराया है। So Yasoda said, no, you didn't. तो यशोदा कहती है कि नहीं, तुमने नहीं किया है। Krishna said, yes, I did. कृष्ण कहते हैं हाँ मैंने ही किया है। But now, barely able to control her laughter, she said, no, you didn't. She's playing a little trick on Krishna. तो यशोदा अपने हंसी को नहीं रोक पाई और बिल्कुल नहीं रोक पा रही थी और कही, नहीं तुमने नहीं किया है। She's playing a little trick on him. तो वो कृष्ण के साथ No, you didn't, Krishna. खेल कर रही है। Yes, I did, Krishna shouted. कृष्ण जोर से चिल्लाते हैं, हाँ मैंने ही किया है। But now, detecting something funny in his mother's voice, तो कुछ हास्यप्रद अपनी माँ के आवाज में महसूस करते हुए Krishna came very close to her face कृष्ण उनके मुंह के पास आ गए। realized that she was tricking him. ये समझ गए कि माँ बेवकूफ बना रही है। So then Mother Yasoda looked at Krishna with wide open eyes and said once more with a smile, no, you didn't. तो यशोदा अपनी आंखें बड़े करते हुए कृष्ण से कहती हैं कि नहीं तुमने नहीं किया है। And then laughing, she threw her arms around her son, covering his now smiling, tear-strained face with kisses. तो कृष्ण को बहुत ही प्रेम से आलिंगन करते हुए कृष्ण के चेहरे पे आंसू बहाते हुए चेहरे पर चूमती है। So at that point, Krishna affectionately, he stroked his mother's hair and still determined not to be outdone by his mother, even after being exposed as a thief, he kissed Mother Yasoda's cheek and whispered in her ear, yes, I did, Mom. तो कृष्ण नहीं चाहते थे हारना, तो वो अपनी माँ के चेहरे पे चुम्बन देते हुए उनके कानों के पास जाके धीरे से कहते हैं कि हाँ माँ मैंने ही किया है। Krishna Kalai Lala Ki, Makan Shor Ki, Maya Yasoda Ki, Ola Premanande, Jai Jai Sri Radhe.